जो इसके साथ बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाउन प्लानिंग है. They have their own pros and cons. And governance and public policy is a new subject that came after the revised syllabus. और इसमें few years अब हो चुके हुए हैं, तो it's quite scoring as well. We'll go through it and we see कि main हमारी themes क्या हैं जिनको हम focus कर रहे हैं. And you'll see कि how the structure it is. So these are the 11 thematic areas, core of them, which is like basic concepts of governance, governance theories. There's governance indicators laid by the World Bank. They have a certain framework which we follow and we say, okay, this is the ideal how good governance should look like. Then you have the UNESCO, UNDP, ADP, and explanation application level in Pakistan. So there are a lot of reforms and governance initiatives which are being done in Pakistan. So we'll go through them in each sector, how those good governance indicators and reforms and frameworks are applied in our country. Then public policy and planning institutions and their role in planning. So accountability, bureaucracy, there is public policy formulation and implementation, multi-level governance in Pakistan, federalism, devolution and decentralization, role of citizens in governance, and good governance in Islam. So ये 11 आपके themes हैं जिसके around the entire course syllabus is actually structured. And इसके अंदर we'll cover in those 12 session each theme, और उसमें basic concepts of governance है. And I'll give you, I actually want to start and see how you are, and if anyone could tell what is the difference between governance and public administration. आप ट्राई करना चाहेंगे आप? शायद हम ऐसी पॉलिसीज जो एक पब्लिक को लेके एडमिनिस्टर करते हैं. ठीक है. गवर्नेंस इज अ ब्रॉडर टर्म इन विच मतलब कि हर सेक्टर, हर जितनी भी डिफरेंट डोमेन्स हैं या जी जी इनके अंदर हर स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर गवर्नेंस चाहिए. ठीक है. मुझे लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें गवर्नेंस. राइट. और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें ऑन ग्राउंड काम करते हैं और ग्राउंड पे काम करते हैं, और इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करते हैं, और गवर्नेंस से हम लोग इसको गवर्न करते हैं कि आइदर वो इम्प्लीमेंटेशन. Thank you. So these are definitions which are very close to actually what we're going to study. Well, Islam. So public administration is the implementation side of things. It is the execution which deals with the executive. And what is the executive here? It includes the government, which has the bureaucracy part of it. And there is the prime minister and the cabinet, which forms the government. So public administration becomes the execution arm. On the other side, let's check this. It's better. Yeah. And the governance side and public policy is basically to decide what policies and decisions we will take or not take. And it includes not only the executive, but it also includes civil society and other stakeholders, third-party stakeholders, such as you saw in the first slide, there were IMFs and World Banks and ADBs. So they also become part of the governance side of things where they're giving input. So it is slightly first stage, and this public administration is the execution stage, is the second side of the coin. So here in the good governance area and public policy, there you are actually playing with how the vision of governance will look like. So it has more to do with ideation, that how the governance should be in an ideal state. And that has been defined through frameworks, that how governance actually looks like. So here we have this basic concept of governance. This defines these things. This defines the definition of good governance. Gives you a framework which is like a Bible says, okay, these are 7, 8 things that should be there, and it forms a country or any entity. It has good governance. Then it has some characteristics. It shows, okay, what participation, there is rule of law, transparency. So what are the rules of the game? It shows, okay, good governance is taking place. It is efficient. It is open. It is accountable.
And these are all the rules of the games which are there, or this forms the whole matrix and equation. इसके अंदर देन इट कम्स दी रिस्पॉन्सिवनेस एंड हाउ इट शुड बी कि कितनी इफेक्टिव है ये, अगर गवर्नेंस हो रही है तो इसके अंदर हमारी आउटकम्स कैसे मेजर हो रही हैं, ये एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं कि नहीं है. सो प्रोग्राम एवेलुएशंस होती हैं टू सी कि ये जो आपने इम्प्लीमेंट की कोई पॉलिसी या डिसीजन लिया, इसकी आउटकम्स क्या है. उसके लिए फ्रेमवर्क्स होते हैं, देन वी स्टडी दोज फ्रेमवर्क्स. सो स्टार्ट फ्रॉम द आइडिएशन. गुड गवर्नेंस इज एन आइडिया, इट्स अ विजन कि हाउ इट शुड बी, वो एक विजन मिल गया. वी हैव अ प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पब्लिक पॉलिसी, वो उसका एक पूरा फॉर्मुलेशन प्रोसेस है. एंड देन वी हैव द आउटकम्स, जो हमें डिसीजन एज एन आउटकम हम डिसीजन लेते हैं कि वी विल इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, राइट. फॉर इंस्टेंस कोविड-19 वाज देयर, तो वी डिसाइडेड पाकिस्तान में कि वी विल हैव अ लॉकडाउन. तो ये एक पब्लिक पॉलिसी डिसीजन था कि हमारा लॉकडाउन होगा. उसको इम्प्लीमेंट जो करवाया वो किसने करवाया, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया, विच वाज द एग्जीक्यूटिव. यूजुअली वी से कि एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिड दिस. आफ्टर दैट जब हमने वो डिसीजन ले लिया कि हमने लॉकडाउन नहीं करना, वी एवेलुएट कि व्हाट वर द आउटकम्स, इट वाज अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन. So it comes into that after post implementation, there is a monitoring and evaluation phase where we come to conclusion that it was a good policy decision or a bad decision, and it was within the framework of good governance or bad governance. क्योंकि decision making जो होती है start के अंदर, it should be like I said, participation, rule of law, transparency. अगर हम public policy एक decision ले रहे हैं and it does not come and follow these things, so we will say it was not a good public policy, or it failed to, actually go through all those tests, and it is lacking of being a good governance. According to, अगर आप लोग से मैं example, let's say good governance according to this example. If you take an example of Singapore, जहाँ पे काफ़ी centralized चीज़ें हैं और decisions come from top down, तो according to this World Bank, you can say definition, which we can study later on in these sessions. Okay, there should be participation, or there should be, there should be a strategic dialogue, which does not take place in those countries. So, इससे क्या सिंगापुर में good governance नहीं है, लेकिन it's not going through this framework. So ये contradictions भी हैं which are there in the system, and you'll see in different cases and different case studies कि not necessarily they're going by the book, और वो अपनी local dynamics के according जो हैं वो चीज़ों को implement करते हैं. Some of them are hybrid systems which are like completely जो आज़ाद हैं, independent, and some have certain checks and third party ownership and decision making say. Here we move towards the, this is the first concept. ये आप लोग हम लोग इस तरह जाएंगे इसमें से. Then there are the governance theories. So whatever we are doing, they are actually grounded in some theories. And they form like the book of knowledge of good governance. आप लोगों को theories के अंदर जो इसमें portion है from the exam point of view, like these are very extensive theories. So we can study them as a good governance subject, and there could be a master's in this. But from the exam point of view, we'll have like a very focused view on these, how each of them are actually applicable practically. Because from the exam point of view, it has one is a theoretical part. Whatever question comes, it's like theoretical part of that, like operational part of that, which is like the application part. Mostly students को challenges वहाँ पे हो रहे हैं all these subjects के जब वो application part आ जाता है. So we will practice okay, we have these theories and how we are applying them and how they come into our everyday of work. So this will be done in this manner. Then third theme है governance indicators laid by. So like I said, ये सारे एक framework हुआ ये कि in the UN, actually this came from the UN. So what they decided was, what is good governance? We need to define this. This is an abstract idea कि आखिर good governance है क्या? And they come up with these 6 areas that they should be part of the whole framework, which will lay the foundation of good governance. तो good governance is इससे बाहर जो है वो नहीं है. So wherever they ask you what is good governance, you will say these 6 things, you will explain them, and then you have certain case studies to back what you're saying and substantiate it. So that's how your exam will also look like.
and how your preparation will be going into this. This is the theme number 3. There's 4, which is like public policy, planning, institutions, and their role in planning. But this is the most critical part, where this forms the heart of the whole governance and public policy area. So हम लोगों ने governance में तो study कर लिया कि what it is. And we decide कि हमने ये decision लेना है. Let's say any decision अगर आप कहना चाहें, like right now कि civil service reforms होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए. तो अगर वो प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं एक विजन के साथ, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर सेज कि मुझे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स चाहिए, तो आपकी राय में उसका पब्लिक पॉलिसी उसका एक डेवलप होनी चाहिए कि ये एक्चुअली एक पॉलिसी क्या होगी, उसका एक पूरा प्रोसेस रन होना चाहिए. आपकी राय में हाउ डज इट स्टार्ट कि वो एक्चुअली वहाँ से एक आइडिया से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक आए एंड इट चेंजेस एंड इम्पैक्ट्स आवर लाइव्स. तो आप लोगों की राय में क्या, हाउ डज इट स्टार्ट? रेवोल्यूशन किस वे में किस तरह इसको रिफॉर्म करना है, किस हद तक. इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये हमें पता हो कि हम किस तरह रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वी नीड कंसल्टेशन. तो वी स्टार्ट विद एन आइडिया एंड वी स्टार्ट अ कंसल्टेटिव प्रोसेस, एंड फॉर दैट वी इनवाइट डिफरेंट पीपल. उसके अंदर सिविल सोसाइटी के लोग जा सकते हैं, यानी कि एस्पायरेंट्स यहाँ से जा सकते हैं इफ द गवर्नमेंट वांट्स. देन वो एक्सपर्ट्स इनवाइट कर सकते हैं विच आर फ्रॉम एकेडेमिया, उसी के दुनिया में ग्लोबली हाउ गवर्नेंस सिस्टम्स वर्क. And then they can also invite people from the civil services and say, ask, Ji, what are the lacunas and you think how we can address them? So this is the consultative process, right? So let's say we have like a whole laundry list, so 10, 20 हमें consultation से आ जाती हैं चीजें. And now we have to crystallize them and see okay, what will, how this will be formulated into a law or the structure. उसके लिए अब हम इसमें design से, we will actually move to from consultation to the design phase. So I'm skipping some smaller portions in this entire process. There are like 5, 6 of them. So we'll read them in detail because they actually exactly like that come into the exam. Or we'll tell you how to draw them as well and how to put them there so that you score well. So what happens is कि आप design process में चले जाते हैं कि policy का you start looking कि legally उसके laws हैं कि नहीं हैं. How structurally it's possible कि नहीं. For instance, अगर मैं decide करता हूँ कि there should be national executive service, तो क्या मेरे पास एक talent pool है उसके लिए जो कि वो उसको feed कर सके. इतने एक्सपीरियंस लोग हैं जिस सर्विसेज के लिए मैं फिल करना चाह रहा हूँ, इट्स हेल्थ केयर और इट्स एजुकेशन सेक्टर, आई नीड टू नो कि डिज़ाइन फेज में मैंने वो सारी चीज़ों को चॉक आउट करना है. डिज़ाइन फेज में वी विल से ओके इसकी ये एरिया होगा कि दिस विल इम्पैक्ट एंटायर पाकिस्तान, इट विल इम्पैक्ट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, दिस विल इम्पैक्ट सच एंड सो कैंडिडेट्स. सो ये हमारा डिज़ाइन फेज हो गया. Next, we will move towards the formulation phase, which will be more on the wording side of things, how this will become operationalized, or we form this reforms package. Eventually, then it comes towards the approval part, or वहाँ से approval, okay, it goes into execution or implementation. And then implementation, after that, there is evaluation and monitoring that how effective this decision was. So here, the entire thing is here. Pakistan ke, they are institutionalized. This entire thing is actually institutionalized. And apex institution in Pakistan for planning is the Planning Commission. जो कि ये पूरे overarching उसका रोल था फेडरल की तरफ से. Before 18th Amendment, it was all in all. So any plan that was built there, that was there, like for instance, the medium-term frameworks for development, and by Dr. Mehboob al Haq was adopted, or he had a great role. फिर after 18th Amendment, things were devolved. So अब आप देखते हैं कि public sector development जो program है, its size has reduced. तो वो रिड्यूस इसलिए है साइज में क्योंकि उसकी जो यू कैन से जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिड्यूस हो गई है. इट हैज़ बीन कट डाउन. मोस्टली अब जो बजट है वो किनके पास चला जाता है? प्रोविंसेस के पास, कि वो अपने खुद प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे एंड दे रन देयर ओन स्कीम्स. तो प्लानिंग कमीशन इज देयर, दे एक्चुअली इशूड अ पॉलिसी स्टेटमेंट. उसका क्या नाम है? इट इज़ अ बिग बुक एक्चुअली, उड़ान पाकिस्तान. ठीक है. So that is there. This is their actually vision, how things will look like in X and X years.
Then there are the role of the donors. I don't like the word donors. They are partners, and nothing is for free. So donors are usually which are like goodies or like grants, but they are actually loans. So they are not donors, but they are like you can say partners. Memorandum of Economic and Financial Policies. Yeah, it's quite old, so we'll read the latest one, but syllabus we have this, so we'll cover this. And public policy implementation in key sectors, which health and education. Let's say public policy implementation of the maximum what they can ask in health and education. Can you tell me what are the major issues or how will you uh, organize your thoughts around answering कि health और education में क्या मसला है? तो ट्राई करना चाहिए जी सही सही और तो मेल जी एजुकेशन तो Okay. कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है इस्लामिक ओके पॉलिसी होनी चाहिए अर्बन रूरल डिवाइड है वो गैप खत्म करना चाहिए ठीक है और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें भी हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए जिस तरह से अगर हम लोग एक बहुत पता नहीं इसमें एग्जाम्पल फिट होगी कि नहीं जो हम लोग एंटीबायोटिक्स पे यूज करते हैं तो ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए जो सिर्फ जो डॉक्टर डिस्क्राइब करे सिर्फ हम लोग वही वाली एंटीबायोटिक्स पे रादर देन कि हम लोग खुद ही से जाके मेडिकल स्टोर्स पे कहते थे हम चीजें दे दूं सही सही इससे बहुत रेजिस्टेंस होती है एंटीबायोटिक ओके आप कुछ कहना चाह रही थी नो ओके देखिए ब्रॉडली व्हाट यू आर सेइंग और I think there is a consensus on this as well. Okay, healthcare and education can majorly there are two big problems. One is excess, the other is quality. So we say excess कि we are in the far-fetched areas, we do not have access to it, and there are social hurdles, economic hurdles. Politically, we do not have a lot of hurdles because हमारी constitution says कि it is a right for everyone to have education and also have it to be treated equally, which also includes healthcare. कि जब उसकी provision हो, so everyone has access to it. So excess big is a factor. We'll have that as a heading. And then the second part is जिसके अंदर हम outcomes की हम बात करते हैं कि there is learning poverty and there are like ghost schools and XYZ. So we'll talk about say कि that is a quality issue of things. इसके अंदर expenditure side या investment of government is already there. हम उसको analyze करेंगे. We'll put it under the scope कि globally around about the GDP expenditure of education or expenditure on education is like 4.5 to 5%. और पाकिस्तान में public sector का expenditure is right 2.5% and similar private side से भी है जो लोग privately खुद spend करते हैं तो वो combine होके 5% बन जाता है मगर हमारी एजुकेशन की वैसी आउटकम्स क्यों नहीं आ रही जिसको हम आज भी कहते हैं कि वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन क्यों नहीं आ रही तो वी हैव दी देयर टू मेजर थिंग्स एक्सेस एंड क्वालिटी एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स अराउंड इट और इसके अंडर आप सारे फिर अपने एनालिसिस दे सकते हैं एंड देन यू कैन गिव केस स्टडीज व्हिच वी विल डिस्कस and give a very comprehensive answer. So we move to the next theme, which is the accountability portion of things. So any government globally, what it want, and also it is part of the good governance structure, कि any things you are doing, अगर आप कोई भी action लेते हैं, it should be done, you are accountable for it. And that is how the Weberian structure is. So if you are part of bureaucracy or you're taking any decision, आप लोग उसके लिए accountable होंगे. Accountability has certain things. They show about it. Okay, there is administrative accountability, professional. There should be national strategies against corruption and remedial measures. So we have certain institutions in Pakistan. Pakistan, there are a lot of them, but let's say we have a three-tiered accountability system. So on the Apex side, what do we have? फेडरल के अंदर या और ओवरआर्चिंग पूरे पाकिस्तान के लिए कौन सा हमारे देखिए वो तो जुडिशरी आ गई बिल्कुल देखें FIA इज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो प्राइमरीली उनका जो है इट्स नॉट एंटी करप्शन वन पार्ट है बट अकाउंटेबिलिटी लाइक वी हैव मेड श्योर कि वो कुछ करें बट अकाउंटेबिलिटी प्राइमरीली जो एपेक्स है इज अ पब्लिक बॉडी विच इज लाइक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके अंदर सारे इदारे जवाबदेह हैं एटलीस्ट फेडरल के एंड देन कम्स दी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो हम लोगों ने फॉर्म की तो वो फेडरल लेवल पे आ गई तो प्रोविंशियल के ऊपर भी हमारी अकाउंट कमेटीज होती पब्लिक कमेटीज़ हैं एंड वी आल्सो हैव द एंटी करप्शन और
Then we have a checks and balances in terms of Auditor General of Pakistan is also doing वो pre-audits करते हैं and post-audits and they are also part of this accountability in modern administration. So they do form part of the accountability structures. And third tier आ जाता है, which we have the local government. They do have their own establishment. इसमें local government DG inspection monitoring आ जाता है, and they go through that. So accountability portion के अंदर हम तीनों tiers को पढ़ेंगे. हम saying कि what are the good practices globally accountability के area में, and we'll have a focus on exams के how the questions are framed और हम उनको कैसे कर सकते हैं. So far, any questions? हम लोगों ने हाफ कवर कर लिए, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट सेशन. सो हम इसमें कंटेंट में इतना नहीं जा रहे. वी जस्ट ट्राई टू मेक अप योर माइंड कि अगर आपने ये सब्जेक्ट लेना है तो हाउ आप लोग कितनी आसानी से इसको कर सकते हैं या कितना मुश्किल होगा ये करना. क्योंकि एवरी ऑप्शनल एग्जाम हैज़ ओनली 100 मार्क्स, सो ऑल ऑफ देम हैव इक्वल वेटेज. और इन टर्म्स ऑफ आपने सिलेक्शन यू हैव टू सी कि हाउ यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स विद द लोएस्ट एफर्ट. So if you have an aptitude or interest in this, even if you don't have, I think इसके अंदर mostly वो चीज़ें हैं which are concerning Pakistan and from developing countries. This is a big discussion topic. कि it's always healthcare, education and overarching आपके ये topics बन जाते हैं in other areas as well. So you have like a pretty solid understanding operational part का. We'll do the theories. So वो उससे जब आप blend करके अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल हैव लाइक अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. Then move towards number 6, which is bureaucracy. So introduction to the concept of bureaucracy. Whose actually idea was bureaucracy? It comes in public administration as well. कि जिसने बताया कि how bureaucracy should be like. This is part of executive. और impartial होना चाहिए. It should be impersonality होनी चाहिए. It should be efficient, responsive. So Max Weber. So Max Weber actually said how bureaucracy should be. And then there are theories on it's written there as well, theories of bureaucracy. And Woodrow Wilson contributed to a lot to the development of public administration. There is very less part here in governance and public policy. Role of bureaucracy in Pakistan, British legacy, and so these are like run-of-the-mill topics. We'll go through them and make your life easier in this subject as well, and other subjects where you can maybe use it. In public administration and code of ethics, so it is talking about ESTA code, जो establishment division issue करती है for bureaucrats, and how their conduct should be actually put under the microscope and seen like governed. Public policy formulation and implementation. Like I said, these are the steps that you go through to actually form a public policy. Or this may start like again the policy making starts how there's the 6 including diagnosis, and then there are the 6 stages with caution to be exercised at each stage. Then you policy implementation and role of bureaucracy, and sees how lack of decision making is, or there is an active decision making, and what are the repercussions and what are the things happening. And then there is a policy analysis part, and then the policy evaluation. In the policy analysis part, what is that the quest for solution, lack of research in policy analysis. So there is a new body of knowledge where talks about like evidence-based policy making. So what they say is कि हम लोग we'll collect a lot of data on certain areas and we'll conduct studies. And accordingly, हम देखेंगे कि evidence we'll compare it to a group which is not going under intervention, and then we are comparing it to another group which is going under certain interventions. And we'll see कि what impact did it have. So we'll compare both of them. So do we have the evidence from the data कि हमारी policy थी वो चली या नहीं चली. Like for instance, for poverty alleviation, there's like direct cash transfer programs in Pakistan, which one of the biggest. Anyone know about BISP, Benazir Income Support Program, right? So it's a direct cash transfer program. Poverty alleviation के लिए, it is done in other countries as well. And Pakistan has successfully implemented it. It's a successful case study.
We have not run any like you can say RCT trial, which is like randomized trials. And उसमें ये होता है कि we are not able to determine कि if it's like evidence based कि it's working or not. But of course हमारी outcomes अच्छी हैं apparently by World Bank, so we are continuing that. Uh, so this is हम लोग ये theme number 7. And you have the 8 multi-level governance in Pakistan. So there is the federal, provincial, and the local governments, which we do not have. So it makes our life easy. But other countries have it. So हम लोग क्या करेंगे कि we will study कि how local governments work. And then उसके अंदर different थे उसमें uh, Zilla government, which is like the district government and its efficiency, performance, and causes of success or failures. We'll see if there is a local government act as well. To most recent, तो we'll have some hands-on experience के उसमें कैसे functioning हो रही है. So far, any questions? Any comments? Any reservations? Governance का power की devolution या decentralization के साथ regarding है किसका? governance कि जितनी devolution ज़्यादा होगी उतनी governance बेहतर होगी. देखिए, we have actually there are countries जिसके अंदर mostly 3-tiered system चल रहा है. So if you look at it, like if you look at China, so China is a very centralized country. Apparently, from the outside, हम सबको लगता है कि the power actually is only in the Chinese Communist Party. And सारे वहाँ पे एक फैसला होता है and it trickles down and everyone goes out और वो सारे फॉरेन करना शुरू हो जाते हैं. ऐसा नहीं है. चाइना की one of the most vibrant local governments हैं. और वहां पे to earn federal grants or have funds, it's like a pitch competition. ऐसे लगता है कि जैसे business competition हो रहा है. Every community or municipality is actually making their business cases and competing with all these other municipalities to get those funds. तो वहाँ पे they actually did a lot of development through the local government. क्योंकि आपका this is very close to the people and this was also a success in South Korea as well कि वहाँ पे local councils बन गई हुई थी and they could know कि हमारे इलाके के लोगों के लिए क्या problems हैं and accountability वहाँ पे थी. They were accessible as well, they were open और efficiency थी. और सेम अगर हम डेवोल्यूशन का मॉडल केरला का भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो कि आगे आएगा इंडिया के अंदर, विच इज़ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस एज वेल. तो उसमें हम लोग एक्चुअली वही मॉडल को पढ़ेंगे ताकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए. वी कैन टॉक अबाउट अदर मॉडल्स, लेकिन ओवरऑल देयर इज एविडेंस के लोकल गवर्नमेंट्स डू एक्चुअली सपोर्ट और दे हैव a role in development. Online we do have some questions. I'll just take them quickly. So we go to the chat and see. अच्छा, तो क्वेश्चंस आर अबाउट स्कोरिंग और नॉट स्कोरिंग, तो वो हम बाद में आएंगे. देखिए, दिस इज नाउ अगेन थीम नंबर 9 जिसकी आप बात कर रहे थे. तो डिसेंट्रलाइजेशन डेवोल्यूशन का भी मुझे बता सकता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवोल्यूशन? जी बिल्कुल. तो बेसिकली वर्टिकल जो होती है वो डिसेंट्रलाइजेशन है कि वफाक से जो है वो सूबों के पास चीज़ें जा रही हैं. देन सूबा क्या करता है कि सूबा अगर हॉरिजॉन्टल करना चाहेगा तो वो अपनी विद इन सूबा देखेगा कि फर्दर हमारी आपस में हम लोगों ने कैसे इसको फैसला करना है. जिस तरह सिंध के अंदर तो लोकल गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर नहीं है, बट दैट कम्स एक्चुअली अंडर अनदर वर्टिकल लेयर विच इज डेवोल्यूशन. तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होगा कि ओके सुबह एक कहेगा कि मेरे पास ये आ गई है, वो अंदर फैसले कर लेंगे डिपार्टमेंट्स के मैं कैसे इसको देना चाहता हूँ, एक के पास कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता, पावर तो वो डिवाइड कर दे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. इफ कोड एक टीयर अगर जंप करके वो बिल्कुल नीचे जाएगा तो वो हमारी फर्दर डेवोल्यूशन हो जाएगी और वो लोकल गवर्नमेंट हो जाएगी.
फेडरलिज्म फेडरलिज्म का आपको अंदाजा है? ओके, सो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। बेसिकली फेडरल इन नेचर, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली फेडरल इन नेचर, और 18th अमेंडमेंट जो थी वो बेसिकली उसी की ही वो थी, एक्सटेंशन थी टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। फेडरलिज्म डज नॉट मीन सेंट्रलाइजेशन, इट मीन्स कि जो फेडरेटिंग आपके यूनिट्स हैं दे हैव पावर टू मेक लॉज, टू डिसाइड कि वो कैसे डेवलपमेंट करना चाहेंगे, और दैट्स एक्चुअली हाउ द फेडरल स्ट्रक्चर इज। एक प्राइम एग्जांपल आप दुनिया में कोई फेडरल स्ट्रक्चर की देना चाहेंगे तो आपके जहन में क्या आता है? इंडिया जी, इट्स अ गुड एग्जांपल जी, यूएस से। So the state governments वहाँ पे and the even local governments, they actually can raise money from the market for their economic development. So वो bond issue कर सकते हैं, and there is a very active market जहाँ पे वो bond trading होती है। तो अभी recently कराची के mayor is also saying कि हम municipal bonds issue करना चाहते हैं, if you were seen that news। तो वो from this concept कि आप money raise कर लें for development, and it's been done abroad as well, तो वो पाकिस्तान में। Role of citizens in governance and good governance in Islam. So वैसे सिलेबस में गुड गवर्नेंस इन इस्लाम के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए था फोकस, तो उसने सिर्फ दो ही वो दिए हैं देयर बुलेट्स, कि शायद इस्लाम गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस ही नहीं करता। तो आई थिंक ऑल्सो लाइक द फिलोसफर्स किंग जो कॉन्सेप्ट है, विच इज ड्राइव फ्रॉम एक्चुअली एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि हाउ द पर्सन शुड बी अपराइट, शुड हैव इंटेग्रिटी एंड शुड हैव कॉम्पिटेंस। तो गुड गवर्नेंस के अंदर कुरानिक गाइडेंस और गुड गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, इट्स एप्लीकेशन इन लाइट्स ऑफ कुरान, सुन्ना एंड फिक। सो ये एंड रोल ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस, यू विल सी के सिलेबस में देयर आर नो बुलेट्स और फोकस ऑन दिस। तो आई थिंक शायद ये वैसे ही हमारे पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में इररेलेवेंट है कि सिटीजन्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि वो पोर्शन लें। बट रोल ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस इज एक्चुअली what happened is कि जापान में there are like public interest councils, more than 500 of them। तो होता ये है कि वो क्या करते हैं कि कोई भी नेशनल इशू है या कोई भी नेशनल इंटरेस्ट की बात है, वो लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप काउंसिल का पार्ट बने। सिर्फ पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस मोस्ट रिसेंटली तो फॉर्म दिस लाइक क्रिप्टो काउंसिल, विच वाज अ वेरी गुड थिंग, कि आप प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को लेके आते हैं ना, यू कंबाइन अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी उनके साथ शामिल करते हैं, और आप एक काउंसिल बनाते हैं, and वो थ्रू कलेक्टिव विजडम दे कम अप विद सम रिकमेंडेशंस, वो जो लॉ बन सकती हैं, एंड इट्स अप टू यू कि आप डिसाइड करेंगे आपने करना है कि नहीं करना। तो जापान व्हाट दे डिड इज कि दे हैव मोर देन 500 देम, वो हर चीज़ के ऊपर बनी हुई है काउंसिल। तो दिस इज वेयर लाइक द रोल ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस। सिमिलरली इन द यूके देयर इज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, हाउस की वहाँ पे बनी हुई है। तो व्हाट दे डू इज कि दे होल्ड मीटिंग्स विद द पब्लिक, दे होल्ड मीटिंग्स विद द सिटीजन्स, ओपन होती हैं, एनीवन कैन गो देयर, और वो उसमें डिस्कस करते हैं कि हम न्यू इनिशिएटिव्स करना चाह रहे हैं पॉलिसी मेकिंग के ऊपर पार्ट। तो दिस इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, बट दिस इज एक्चुअली द पॉलिसी मेकिंग पार्ट। एट पब्लिक दे कंबाइंड, उन्होंने थोड़ा हाइब्रिड बनाया हुआ है, लाइक इट्स जस्ट लाइक देयर कॉन्सेप्ट, बिकॉज यूके से निकला था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एनपीएम का कॉन्सेप्ट, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा डिस्कस होता है। तो दैट्स वाई दे फॉर्म लाइक दिस ओपन फोरम्स जहाँ पे citizens can come and contribute कि how their life should be. So that's how our syllabus will be like, और हम इनको 12 सेशंस में ख़त्म करेंगे in a month, and within that month also we will have a midterm and a final। तो ये तो हमारा हो गया, and then I'll have office hours which will be like 20-minute slot, so I'll issue them कि I'll take around about like 10 of them or 8 of them every weekend। So you can have like in a month like 4 opportunities to first come on first basis पे you can sign up, और उसमें you can discuss अगर आपको कोई concept related issues हैं या अगर आपको कोई writing related issues हैं। तो any questions from the class? Okay। देखिए it's entirely there are 3 things what you should do अगर आप एक कोई subject ले रहे हैं। Number 1 is your aptitude।
and number 2 is your interest, and number 3 is कि how the subject is scoring. And you can compare, आप compare कर लें, you put this decision into a test. आप अपना I have given you the framework, आप उसमें apply करें कि आके if I'm checking all these boxes, तो you will have the response yourself कि public administration आपने लेना है या governance लेना है. And I cannot predict, like बहुत सारे लोग कर रहे होंगे predict कि ये वाला subject जो है ये scoring होगा या ये वाला scoring नहीं होगा. I would say कि it has remained a stable subject. Stable का मतलब ये है कि people have consistently scored like 55 marks, 50 to 60 की रेंज में एवरेज कैंडिडेट. और अगर जो बहुत अच्छा कैंडिडेट होता है इट कैन टेक दे कैन गो फ्रॉम 70 to 80 मार्क्स. सो जो हिट होने वाला सब्जेक्ट होता है व्हाट वी कॉल, वो सब्जेक्ट है विच इज गिविंग लाइक 40 to 50 मार्क्स, विच इज लाइक अ रियली लो बॉल स्कोर. तो 40 to 50 की आपने उसमें नहीं आना. वट एवर डिसीजन यू टेक ऑन अ सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहेंगे तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 50 to 60 रेंज में हो एवरेज तैयारी के साथ. एंड इफ़ यू आर एक्सेप्शनल तो आप वो 60 से 70 भी जा सकते हैं, 80 भी जा सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली पंजाबी हर ग्रुप में अवेलेबल नहीं है, या लैंग्वेजेस अरबिक या दूसरे सब्जेक्ट्स हर ग्रुप में अवेलेबल नहीं है. तो आपको 100 मार्क्स कहीं ना कहीं से तो लेने हैं. तो उसके अंदर और एवरी सब्जेक्ट इज ऑल्सो गिविंग 100 मार्क्स. अब ऑन्थ्रोपोलॉजी आपको 120 तो नहीं देगा, या इफ देर इज अनदर लाइक mass comm or journalism is also very good course, तो वो more than 100 तो आपको नहीं देगा. That's one 80 to 70 you'll score, but you need to go towards a safer option. So in terms of this, I found governance to be a safe option. कि roundabout like you can, if you are an average effort person, तो आप तकरीबन इसमें 50 से above 60 मार्क्स में जा सकते हैं. एंड हायर 50s होंगे, लोअर 50s नहीं होंगे. विल हैव MCQ पोर्शन ऑफ इट एज वेल. तो उससे ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन इतनी हो जाएगी इन दिस स्मॉल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि आप इसमें अपने ये 100 मार्क्स जो है ना you'll score well in this. So any more questions on the scoring part of things? Because I think this is a critical decision. Like I said at the start of the class कि ये कोई academic class नहीं होगी. This is an exam preparation class. So we'll be entirely focusing on what is actually coming in the exam. आपका कोई सवाल और कोई questions या कोई चीज़? उसके अंदर we will, so उसके अंदर there is a paper attempt की टेक्निक है. That is the paramount of importance. कि नॉलेज आपने CSS में देखा होगा कि वो आपको एक सर्टन लेवल तक लेके जा सकती है. सो ये जो हम लोग बना रहे हैं इन अदर सब्जेक्ट्स के, इसकी आउटलाइन बननी चाहिए, इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, अदर साइड ऑफ द कॉइन आना चाहिए, कंक्लूजन आनी चाहिए, एग्जांपल्स आनी चाहिए, फैक्ट्स आना चाहिए, रिपोर्ट्स आने चाहिए, मैप्स आने चाहिए. व्हाट इज दिस? ये एक पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, राइट? तो अगर आप ये गवर्नेंस के अंदर चीज़ें लेके आएंगी, वी डोंट नीड मैप्स बट वी नीड लाइक फ्लो चार्ट्स, वी नीड पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज. सर आप अगर उसके लिए आसानी पैदा करें, अगर आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन का उसको आप फ्लो चार्ट बना देंगी तो ही कैन ईजिली सी के ओके दिस बंदे को पूरे 6 के 6 उसके सेगमेंट्स आते हैं, तो यू स्कोर ऑटोमेटिकली 6 मार्क्स. वो तो 6 हो गए. देन यू गो टुवर्ड्स देयर एक्सप्लेनेशन एरिया एंड यू टेल देम कि इसमें क्या क्या अहम चीज़ें हैं, और आप उसके साथ एग्जांपल्स कोट करती हैं. देन यू स्कोर मोर मार्क्स ऑन दिस. फिर आप उसमें जो सेकंड पार्ट होता है यूजुअली विच इज़ द एनालिसिस पार्ट, जो ऑपरेशनल पार्ट उसका होता है, वो आप प्रेजेंट करती हैं. तो देन यू स्कोर, आप 15 to 20 की रेंज में आ जाती हैं आउट ऑफ 20 मार्क्स में, विच इज़ अ हाई स्कोरिंग साइड ऑफ थिंग्स. लेट्स से वी हैव 80 नंबर का रिटर्न हो गया है ना, आप कंसिस्टेंटली 15 मार्क्स आंसर में स्कोर कर रहे हैं तो आप 60 पे आ गए, और बाकी 20 तो MCQs हैं आपके. अब उसमें आपकी अपनी एफर्ट है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं. इट बिकम्स अ वेरी वो रियलिस्टिक गोल. अगर आप कहते हैं कि मैं लेना चाहता हूँ 18 नंबर आने चाहिए मेरे, 19 आने चाहिए, 17 आने चाहिए, दैट्स टोटली अप टू यू. बट दिस मीन्स कि आप नंबर ऑफ जो एफर्ट आप उसमें डालेंगे उस पेपर में, वो फिर आपने लाइक आवर एफर्ट विल बी टू टेक यू टिल 70 80, बट उससे ऊपर आपने जाना है तो दैट इज योर ओन एफर्ट जो आप अपनी सेल्फ स्टडी करके करें कि हम उसमें इतना एक्सेल करेंगे. हमारा मेरे हॉस्पिटल में हेडफोन तो मैं गवर्नेंस गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी करती है.
तो they said कि नहीं ये मूवी रखनी तो उसका तो मटेरियल भी नहीं है इतना, बुक्स भी नहीं है उसकी। Actually this is the thing. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी सब्जेक्ट की आप देखें, देर इज नो बुक एक्चुअली, ऑल ऑफ देम आर विकिपीडिया नॉलेज। क्योंकि एग्जाम मैंने भी दिया हुआ है और मैंने भी तैयारी की हुई है, तो जब मैंने की थी तो आई न्यू कि व्हाट गार्बेज इट इज। और गवर्नेंस का इसमें ये है कि इट स्लाइटली क्वालिफाइज मी टू टीच दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आई स्टडीड अ मास्टर्स इन दिस। तो मुझे लगता है कि आई कैन गिव यू दैट कंटेंट जिससे आप अपना सक्सेसफुली ये पास कर सकते हैं। But in terms of books, there are certain books. ये online question भी है about books. Recommended books में there is a book called Governance, और उसका title यही है. You can look it up for basic things. But rest of it is कि we will have a curated material, और आपको recommended होगा कि आप उसमें से बाहर ना ही जाएं तो बेहतर है। तो उसको तैयार करें and like focus on कि आप अपना answers कैसे करेंगे, and I think you will score pretty well. This is what we have done as well, and it has been tested. So I did share that with other some students before as well, and they did pretty well by just studying that. तो हम इसको इसी तरह, मकसद यही है कि 1 month का, कि आपको if you want to read books or so, it's up to you, but I don't think you need to go out of that. हम आपको इतना अच्छा प्रिपेयर करवा दें, एंड वी गिव यू द कंटेंट टू सक्सीड। और आपके जब हम आपके एवेलुएशंस भी कर रहे हैं, डूइंग द ऑफिस आवर्स एज वेल टू डिस्कस के इंडिविजुअली कि आप क्या कर, प्रॉब्लम्स आपकी क्या क्या हैं, क्या फोकस है। इफ़ यू कम अप विद कि अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो देन वी कैन एक्चुअली गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा ऑन टॉप। फोकस के अ पर्सन हैज़ अ एक्स वाई जी डेफिशिएंसी, हम उसको प्रेस्क्राइब कर देंगे, गो रीड दिस बुक, दिस चैप्टर, दिस विल हेल्प यू डू वेल। Other than that, I don't think we don't want to tire you, क्योंकि आपके बाकी 1100 भी हैं, and this is going to give you only 100 marks, and in that you have to score like 60, 70, 80 on I would want you to कि आप लोग एवरेज एफर्ट के साथ 60 to 70 लें, ताकि थोड़ी ज़िंदगी भी आसान हो। सारे लोडेड सब्जेक्ट्स जो हैं, in reading, like there's a lot of content heavy subjects, just IRS very content heavy, political science is very content heavy. So थोड़ा सा you have to take this decision. Public ad is also content heavy. I took that actually, मैंने जब किया था तो I did public ad, and that year it was very low scoring, but still I think I scored 76. I can read, but it was plus 70, and very few people got it. And I think उसमें primarily यही थी कि मैंने बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत की हुई थी, और that was the case. But content wise from market, like the material was like really subpar, कोई इतना अच्छा material मिल नहीं रहा था। So this is it. You can see with the if there are any things. So next week, so we will start off, and we'll do like 3 sessions in the week. Or then let me know if there are any questions or so. You will see. Okay, so there is a question: is GPP a safe option? I think it's a safe option. और जो मैंने आपको reasons दिए कि आप उस territory में नहीं होना चाहिए जिसमें 40-50 marks आ रहे हैं। And you see it with your eyes as well कि कुछ subjects are written there कि हाँ जी इसमें तो आने ही कम है, like for instance अब US history is there, and all it has like repeatedly been a low scoring, बीच में एक दो में था that it scored, people started scoring, but I think there was a year जिसके अंदर 2020 में I think था या 2019 में था जिसमें US history में लोग फेल भी हो गए थे, और people scored like 70 to 50 marks. So हालांकि in comparison to it there is European history and others as well. So with low effort you can score more. The same as here कि you need to have a subject कि जिसमें आप low effort and high score achieve कर सकें. So there is a question कि जी Qaid's vision governance on governance has been asked many times but is not stated in the syllabus. देखिए, what was Qaid's mission and vision? His vision on governance point of view was, in my opinion, he said his idea was of an egalitarian society, कि जहाँ पे सब लोग जो हैं
the primary, irrespective of Muslim hai, whatever your religion is, whatever area you are from, you are all Pakistanis, you are all equal. And that lays down the foundation of the constitution as well. Yeah, that was his vision, and then हमारे 73 की constitution की भी हुई. So you start with a quotation. We can focus on Qaid a bit, where he says कि जी हमारी that sets up the tone कि उससे उनका, if we have a direct quote from him, we put it there, वो set कर देता है tone हमारे answer की to the examiner knows कि okay कायद का vision क्या था, and then you can put the good governance framework उसके अंदर आप लेके आएंगे कि कायद के विजन के अकॉर्डिंग ये सब चीजें जो थी, जो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ कह रहा है, वो कायद का विजन था कि आप ये सब चीजें होनी चाहिए. एंड तो दिस विल एक्चुअली हैव अ वेरी सॉलिड एंड कंक्लूसिव आंसर. तो इररिस्पेक्टिव कि वो सवाल आपसे क्या पूछता है, what it is doing is, like I said, कि there is a theory part but there is an operational part and you have to be smart on operational part कि आप अपने learned material को कैसे उसके अंदर लेके आते हैं. अब Qaid also focuses on civil servants के you have to like work hard and you should be like impartial. आपने किसी के साथ affiliations नहीं करनी and you should be bipartisan. आप किसी पार्टी के साथ affiliated ना हो. And this primarily comes जो हमारी मैक्स वेबर की भी theory है कि he says कि impersonality होनी चाहिए bureaucracy के अंदर और system के अंदर, and there should also be impartial and non-political. और then we have a bureaucracy whole chapter on that जिसके अंदर हमने mention किया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो आप इसको इसमें combine कर लेंगे तो this will actually form your answer. So this is how our practice will be like. Any further queries? अगर कोई एक और दफ़ा सवाल पूछेगा कि ये सेफ सब्जेक्ट है तो देखिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अपना टाइम इस चीज़ पर. पर्पस इज कि जब आप इधर आ रहे हैं तो पर्पस है कि हम जो आपको कंटेंट देंगे ना, दैट इज रेडी फॉर एग्जाम. एंड देन अगर आपने अपने आप को टेस्ट करना है कि ओके वट एवर वी हैव लर्न, एम आई एबल टू अप्लाई इट, तो आप पास पेपर्स कर लें. एंड आई विल रिकमेंड यू कि जो हमारे ऑफिस आवर्स हों उसके अंदर आपको पास पेपर का क्वेश्चन करके आ जाए, वी कैन डिस्कस इट कि जी मैं इसमें कैसे अप्लाई करना चाहता हूँ अपनी थेरी को, और जो मैंने लर्न किया है तो ये ऑपरेशनल पार्ट है. तो दैट्स हाउ इट शुड बी. व्हेन यू गो टू जे स्टोर एंड सो लाइक यू नो व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट सो मच टाइम, क्योंकि ये वो नहीं है, रिसर्च पेपर तो नहीं मांग रहे वो आपसे कोई भी ना. उसने इस तरह का कोई सवाल अगर करना भी चाहें ठीक है, दैट्स फाइन, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ पर्पस. आपने यू हैव टू स्कोर वेल एंड यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी. इन स्ट्रैटेजी यही है कि यू हैव टू विन बिफोर गोइंग इनटू योर एग्जाम. आपने जाने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना स्कोर इसमें आ रहा है. अगर आप उसके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, आपका पेपर भी कंप्लीट नहीं होगा, यू विल नॉट डू वेल. तो रियलिस्टिकली यू शुड हैव बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम, यू शुड नो कि मैं ये पास करूंगा कि नहीं करूंगा. और अगर आप इफ़ यू हैव डाउट्स अबाउट इट तो देन डोंट टेक द अटेम्प्ट. अगर क्योंकि वैसे ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है. एंड सिमिलर थिंग इज़ लाइक लोगों को पता होता है कि इन्होंने इंग्लिश का ऐसे या प्रैक्टिस नहीं किया हुआ एंड दे विल फेल, बट दिस स्टिल गो इन. तो द प्रैक्टिस वगैरह आप करेंगे, चीज़ें होंगी, यू विल बी कॉन्फिडेंट कि ओके यू विल बी एबल टू डू इट. So I think this okay, for GPP there is no need for any background. Most of the questions are discussed here are affecting our lives every day, or somehow or the other people do have some understanding okay what's happening. So you can use some general knowledge and combine it with theories and application, so you'll have a good answer. So some people say कि मैं बगैर तैयारी के गया था and I scored like 40 to 50 marks. So how it happens is कि basically generic जब आप आंसर लिख देते हैं तो वो you can reach a certain level. But अगर आपने उस threshold को cross करना है तो then you have to give them an academic view of things as well, जो कि उसने अपने syllabus में outline किया हुआ है. तो we'll use it and try to win more marks. So with this we'll end this session. Thank you very much. And I hope to see you everyone.
next week.